last year, my life changed on its axis as soon as I got cancer. And for the last couple of months, I've had a very, very severe type of treatment. And we slowly thought it was finally beginning to work. And then I was getting ready to go back to university. And then within 2 months, I relapsed. And it was February, I got my notice of a relapse where the cancer went to my brain and my spinal cord instead of the bone marrow this time. And Babji, it's been the worst experience of my life. The chemotherapy, the toxicity, everything that came from it just has not sat well with me or with my family. And there have been so many nights where we've woken up not understanding like what's happening or where we're going. I think we stayed at the hospital more nights than we stayed at our house last year. And I really, really want this to be the end, Babaji. Beta, doctors can only treat you to a certain point. Beyond that, we are dependent upon His grace. Now you have to be positive. If you are positive, beta, the body starts fighting back. I've gone through cancer. I know how it feels when one is going through chemotherapy, the after effects, everything. But you have to be positive. If you are positive, the body will start fighting. If we are negative, you are fueling the fire, you're just putting additional pressure. So we owe it to ourselves, we owe it to the family to be positive. Beta, coming and going is in the Lord's hand. And nobody can turn that. So why even think about it? You do your best, be positive, and I'm sure with His grace, we can manage. ਰਾਸਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਧੁਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਮਦਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਾਮਦਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਲੁਕ ਨਾਮਦਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੋ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਔਰ ਧੁਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਵਕਤ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੁਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਧੁਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਧੁਨ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾलिक ने शब्द वापस बुला लिया तो जिंदगी खत्म हो जाएगी बेटा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से भी राधा स्वामी बाबा जी थैंक यू सो मच, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी क्वेश्चन पूछने की। बाबा जी, आज से कुछ साल पहले भजन सिमरन करते हुए मुझे कुछ एक्सपीरियंस हुआ जिससे मैं बहुत डर गई और मैंने भजन सिमरन छोड़ दिया। उसके बाद से बाबा जी मेरा भजन सिमरन दोबारा बना नहीं। बहन जी, हमने देखो, मन में कोई ताकत नहीं है, मन को ताकत आप देती हैं जब आप डर जाते हैं। अब मन सिर्फ प्रभावित कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। वो अलग अलग प्रभाव आपके सामने रखेगा। अब जैसे हम सिनेमा हॉल में जाते हैं ना, खुशी की चीज है, हम हंसना शुरू कर देते हैं, गमी की चीज है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर फिर हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि इसमें असलियत तो कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ स्क्रीन पे है। तो वैसे ही मन सिर्फ प्रभाव डालता है, कोई ताकत नहीं। सो इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। आप करती जाएंगी भजन सिमरन, कुछ नहीं होगा। आपने तो भजन सिमरन से खुशी हासिल करनी है। ये मन के बहकावे हैं और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच बाबा जी, अपनी दया में बनाए रखना। राधा स्वामी दीनदयाल बाबा जी, लास्ट टाइम जब क्वेश्चन ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਨ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਦੀਨਦਿਆਲ, ਮਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਪਿਆ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਨ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵਾਂ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੀਨਦਿਆਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ੋ ਦੀਨਦਿਆਲ। ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਹੁਣ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ
बीमार आदमी कहे जो मैं ठीक हो गया फिर मैं डॉक्टर ते जाऊंगा। मन ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਪਾਈਆਂ? ਆਪਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਬੇਟਾ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਗਾੜ ਲਈਏ, ਕਿਹਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ? ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ। ਸਹਿਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਊਗਾ? ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੇਟਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਪਾਣਾ? ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਲਜ਼ਤ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਨ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਰਹਿ ਵਿਰਹਿ ਆਖੀਏ ਵਿਰਹਿ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ। ਸੋ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਰਹਿ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਕਿ ਵਿਰਹਿ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਮਨ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਮਾਲਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਿਰਹਿ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂੰਗਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਤੇ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਓ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਿ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਇਆ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਵੇ। ਰਾਸੋ ਜੀ राजन बाबा जी, सो मेरा क्वेश्चन है कमाई, कर्मों और नामदान के बारे में। हम लोग हम जो भी जॉब करते हैं कभी कभी उसमें झूठ बोलना पड़ता है। हम शायद जानबूझ के ना बोले लेकिन सर्वाइवल के लिए या मजबूरी में कोई झूठ बोलते हैं या वो कुछ ऐसा काम करते हैं जो हम नहीं करना चाहिए। For an example, right now I'm an international student over here and I have to work through consultancy. So वहाँ पे बहुत कुछ ऐसा होता है कि हम ना चाहते हुए भी सर्वाइवल के लिए करना पड़ता है। So इस प्रकार की जो भी कमाई है या जो भी उससे कर्म बनते हैं और वो किस तरह प्रकार के कर्म होते हैं और ऐसे कर्म के साथ क्या हम नामदान के लिए एलिजिबल होते हैं? बेटा देखो, अगर हम ये सोचते हैं ना कि हम अपने सब कर्मों का हिसाब किताब खत्म करके तब नामदान लेंगे, फिर तो मकसद ही नहीं है नामदान का बेटा। नामदान तो अब चाहिए क्योंकि इंसान डोलता है, इंसान को सहारा चाहिए। वी नीड एन एंकर इन लाइफ। क्योंकि बेटा इंसान में ताकत नहीं है कि वो उसूलों को पूरा कर सके। जब तक अंदर से वो ताकत नहीं आएगी इंसान डोल जाता है। और बेटा कर्म तो हर एक चीज से बड़े। अगर हम ये जस्टिफिकेशन दे कि मैंने इसलिए किया है, हर एक चीज से कर्म बनेगा बेटा और बोझ भी हमें उठाना पड़ेगा। देखो हम कहते हैं कि किस्मत मालिक ने बनाई, जो किस्मत में लिखा है जरूर मिलेगा, जो किस्मत में नहीं लिखा दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। तो फिर हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करते हैं? अच्छा, क्योंकि कभी कभी मैंने भी नामदान लिया नहीं है लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें और बहुत सारी मुझ में कमियां हैं। नामदान लेना चाहता हूँ लेकिन ऐसा लगता है कि पता नहीं कि उसके काबिल ही नहीं है। काबिल तो बेटा कोई भी नहीं है। नामदान लेके भक्ति करेंगे तो काबिल बनेंगे बेटा। एंड अगर थैंक यू। जिस दिन हम काबिल बन गए फिर तो नामदान की जरूरत ही नहीं रहेगी बेटा। Only a sick person goes to the doctor. He doesn't say when I'm okay then I'll go to the doctor. थैंक यू एवरीथिंग। बहुत लकी फील करता हूँ कभी कभी जो भी मेरे पास है। कभी कभी माय फादर पास्ड अवे इन नवंबर 2019, आई वाज नॉट एबल टू गो टू इंडिया। कुछ कुछ बातें बाद में पता चली जिससे गिल्ट फील होता है। इम्पेशेंट हो चुका हूँ, कभी कभी गलतियाँ कर देता हूँ। माय मॉम इज कम्प्लीटली ब्रोक राइट नाउ। सो कभी कभी इम्पेशेंस में गलतियाँ हो जाती है। जस्ट बेटा माँ बाप को बच्चों की खुशी चाहिए। अगर आप पैरों के ऊपर खड़े हैं, अगर आप सेटल्ड हैं, वो माँ बाप के लिए बेहतर है बजाय इसके कि आप वहां उनके साथ घर में बैठे हैं। सो अगर आप सेटल्ड होंगे, आप खुश होंगे, माँ बाप को अपने आप खुशी होगी बेटा। माँ बाप सब कुछ सह सकते हैं, बच्चों का दुख नहीं सह सकते। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट दैट यू आर सेटल्ड एंड हैप्पी। बस कभी कोई गलती करो, हिम्मत देना कि मैं उसको सुधार सकूं और राशन जल्दी से नामदान की बख्शिश करना। लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस बेटा। हम में से कोई भी संत नहीं है।
हम यहाँ हैं कर्मों के कारण हैं, गलतियां होंगी, मगर गलती करके सीखेंगे, उसकी बख्शिश ही बख्शिश है। प्रॉब्लम पड़ती है, हम माफी मांग के फिर दोहरा देते हैं, फिर बोझ हमें उठाना पड़ेगा, मगर जिंदगी से सीखोगे, बख्शिश ही बख्शिश। I'll try my best, Babaji. Thank you. Radha Soami. Radha Soami Babaji. Everyone defines success differently. I've been very fortunate in my life for many things. I couldn't even list all the things that I've been fortunate for. Something that seems to always upset me is that I work really hard, in my eyes at least. I generally try to help others succeed and maintain integrity in everything that I do. But I always find myself taking one step forward and falling two steps back. I'm having trouble understanding why this happens and why I see so many that do things unethically rewarded. It makes me feel like karma isn't real or mine's just really that bad. Each one of us, wherever we are, it is because of our karma. Karma means action. For every action, there's a reaction and there's a consequence. So the sum total of our karmas makes our destiny. Destiny puts us into a situation. Now, success is in how well you solve your problems. It doesn't depend upon where you've reached, how much money you've made, or anything. It's how well you solve your problems. Because if we are not able to solve our problems, we are going to start compromising. And with compromising, we're just going to add to our burden, not become any lighter. Now, what is our objective? If we come to a spiritual path, our objective is that whatever responsibility stems from our karma, we want to finish it off. Once you finish it, you become lighter. The lighter you become, the faster is your pace towards your goal. For the other person, he compromises, he's not concerned. He's going to have to come back again and again. Do we want to do that? No. So, at the ending of the day, what we are all seeking is peace of mind and happiness. These are all a means. Position, money, relationship, they are a means, they are not the end. The end is peace of mind. Why do we run after money? Because we think we can buy many things that will make us happy. Why do we want a position? Because we think with that we can lord it over others. That will give us happiness. So they are all a means. We've confused the ends and means. Now, if you start compromising, you're putting more pressure on yourself. If not today, tomorrow you're going to have to answer for that. So better the world is round. Everything comes back. If you're going to compromise, the consequence of that, if not today, you'll have to face it tomorrow. Why would I want to compromise? It's better to have little and be happy than to have so much and not be happy. Thank you, Babaji. Radha Soami. राधा स्वामी बाबा जी। मैं नामदान नित्ता सी बाबा जी। उस दिन मैं क्या सी कि मैं सिमरन करांग बहुत नालायक बच्ची हां बाबा जी। तुसी हर जगह ते मेरा बहुत मेरा कोई बच्चा नालायक नहीं गा, सारे ही बहुत लायक है। फर्क सिर्फ इतना हैगा बेटा, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। बाबा जी तुसी कदी मेरा साथ नहीं छड़िया, तुसी इस नालायक बच्ची दा हर वक्त साथ दिता, बस ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾਲਾयक ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾਲਾयक ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣੀ। ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਭਰੂਗਾ ਉਹ, ਮਗਰ ਭਾਂਡਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। बाबा जी राधा स्वामी बाबा जी। Radha Soami, ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ, I try my best and do it actually as a hukam of ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ and for you. I try my best. It's very soothing. I want to convey my thanks to you. ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਪੁੱਲ ਖਿੱਚੋ ਜੀ।
so that I can do it more. Please, I want to thank you through my actions. So, थोड़ा सा और खिंच पाओ sir, please. भाई साहब ਆਪਾਂ ना we should never sort of judge our meditation. Just learn to enjoy it. The more you enjoy it, the more the consciousness will rise. You know, we don't have to go anywhere. We don't have to reach anything. We are not concerned with what we see or what we hear. These are just signposts given to us. We just need to enjoy it. So learn to enjoy your meditation. And if you start enjoying your meditation, the consciousness will automatically give you that. कोशिश कर दिया sir. I try my best. ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੈਵੀ ਅਰਦਾਸ and ਫਰਿਆਦ. I grew up in a Sikh religion. ਬਚਪਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗਿਆ ਜੀ. I used to read Japji Sahib, I still do it, Sukhmani Sahib. Then Hazur ne pull mari and I came on the path. Santmat, beautiful path ji. I like it, I love it. Half of my life, bachpan bada acha gaya ji. The rest half, I'm going through a lot of mental pain. I understand ji, कि everything is because of my karma. कुछ कितने होने पिछले जन्म में, I'm not aware of. So I'm going through that. किसी ना कोई शिकायत नहीं सर. Not to Hazur, not to you. For me, you are Hazur, you are Babaji, you are my Vaheguru. थोड़ी जी बहुत पेन है सर. मेरे को प्लीज ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ. ਮਾਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ. ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ. ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਜ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ, ਜੇ ਭੀਖ ਮੰਗਾਏ ਤਾਂ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਏ. ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ. ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਹਰੇਕ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ. ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, I try to absorb that. ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਕਦੇ ਵੀ. Hi, Babaji, Radha Soami. It's so good to see you. Thank you for the opportunity. Babaji, I've been through a lot, and through all of the things that I went through, I found myself coming closer to you. And because of you, everything turned out so good. And I'm so grateful. I'm so grateful to you, Babaji. Beta, there's always light at the end of the tunnel. You know, sometimes we are too hasty in everything. If we just have patience, we need to space ourselves up. If we have patience, beta, and we have faith, everything will work out. Never be in a hurry. Just always learn to be positive. And if we are positive, you know, you can go through hell without it affecting you at all. Absolutely. Absolutely. I felt your strength within me through the flames of hell. And you were my support. You're my friend. And I feel you with me all the time. And thank you. Radha Soami Babaji, I have a really difficult time accepting God's will. I'm constantly thinking of how my life would be better, or I would be happier if things were different. What can I do, Babaji, to change this mindset? Because there are certain things which are in our hand and certain things which are not in our hands, beta. Maharaji always used to give the weather as an example, that it's going to be hot and it's going to be cold. Now I say I don't like the heat. Is the weather going to change for me? I can protect myself. When it's hot, I sit under the fan. When it's cold, I wear extra warm clothing. So similarly, to say I can change the world, I can change people, I can't. But I can change myself. I can strengthen myself so that whatever they do or say, it doesn't affect me. So let's focus on that. We need to strengthen ourselves. The law of nature is if you show weakness, everybody will take advantage. If you show strength, nobody will take advantage better. That's the law of nature.
The bigger animals take advantage of the smaller animals. The big fish eat the small fish. That's the way of nature. So we need to be strong. We need to strengthen our resolve. We need to strengthen ourselves so that nobody can take advantage. I try, Babaji. Why should we be dependent upon anybody? We've created such a dependency upon people, upon others. That's why we are suffering the consequences. You have to learn to live with yourself. If you're comfortable with yourself, beta, you won't have to answer to anybody. I struggle with that a lot. Beta, whatever the Lord has given us, it is sufficient for us. We just need to get a comfort level. We all have strengths. We all have weaknesses. There's nobody who's perfect in this creation. So all we need to do is, we need to find our strengths and overcome our weaknesses. Self-realization before God. Thank you, Babaji. Radha Soami.